Hello students, Ncert solutions class 11th physics, chapter number 9, mechanical properties of solids. Question number 18, a rod of length 1.05 meter having negligible mass is supported at its ends by the two wires of steel wire A and aluminium wire B of equal length as shown in the figure. The cross-sectional area of wire A and B are 1 millimeter square and 2 millimeter square respectively. At what point along the rod should a mass M be suspended in order to produce A part equal stress, B part equal strain in both steel and aluminium wires? Given Young's modulus for steel is equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, and for aluminium is 7 into 10 to the power 10 Newton per meter square. Given this rod of length 1.05 meter and negligible mass, and it is suspended from two wires, wire A and wire B, and this mass M is hanging at point D, suppose, right? Given that the length of wire A, length L1 is equal to suppose L, and its area of cross section A1 is equal to 1 millimeter square, and Young's modulus Y1 is equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. And similarly for wire B के लिए हमें given है this length is also L, and this area of cross section A2 is equal to 2 millimeter square, and Young's modulus this Y2 is equal to 7 into 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कहता है इस मास m को हम कहां पर सस्पेंड करें जिससे कि दोनों वायर्स A और B में इक्वल स्ट्रेस डेवलप हो. हमने सपोज किया इस एंड से x डिस्टेंस पर सस्पेंड करने से दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेस डेवलप होता है. देन let F1 and F2 be the tensions in wire A and B. Then इस मास को सस्पेंड करने पर हमने सपोज किया यहाँ पर टेंशन F1 डेवलप होता है, इसमें F2 डेवलप होता है, और हमें गिवन है कि इक्वल स्ट्रेस प्रोड्यूस करना है. देयरफॉर स्ट्रेस दोनों के अंदर हमें इक्वल चाहिए. स्ट्रेस इन वायर A is equal to stress in wire B. Now, this stress, force upon area, this F1 upon A1 is equal to F2 upon A2, right? ये हमें given था क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के लिए. Now, this can be written as F1 upon F2 is equal to A1 upon A2. And now area of cross section 1 upon 2. This is equation number 1, suppose. Now, taking torque about point D, then torque is equal to force into distance, perpendicular distance. So this is F1 into X. F1 into X is equal to this F2 into 1.05 minus X. Or this can be written as this is F1 upon F2 is equal to this is 1.05 minus X upon X. इक्वेशन नंबर 2. हमने पॉइंट डी के अबाउट टॉर्क लिया. यहाँ पर हमारा टेंशन था F1 और यहाँ पर हमारा टेंशन F2. नाउ टॉर्क इज इक्वल टू पॉइंट डी के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. This distance is 1.05 minus x, and because this rod is stationary, therefore both torque are equal. Hence from equation 1 and 2, here F1 upon F2 and here also F1 upon F2, therefore this is 1 upon 2 is equal to 1.05 minus x upon x. And on solving, this is x is equal to 2.10 minus 2x, and from here x is equal to
7 मीटर। ना बी पार्ट में कहते हैं इक्वल स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है। गिवन स्ट्रेन इन वायर ए इज इक्वल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस इन वायर बी। नाउ यू नो स्ट्रेन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन this is stress upon Young's modulus A1 Y1, or this is equal to F2 upon E2 Y2, and this can be written as F1 upon F2 is equal to this A1 Y1 upon A2 Y2. On putting values, this F1 upon F2 is equal to A1 is 1, A2 is 2. Young's modulus of steel wire is how much? This is 2 into 10 to the power 11, and for this aluminium is 7 into 10 to the power 10. On solving, this is 10 by 7, and this is like equation number 3. Now from equation 2 and 3, equation 2 and 3 क्या लिख सकते हैं? This F1 upon F2, and this is here also F1 upon F2. Therefore this is 1.05 minus x upon x is equal to 10 by 7, and this can be written as 10x is equal to this 7 into this 7.35 minus 7x, or this can be written as 17x is equal to 7.35, and from here x is equal to, on solving, this is 7.35 upon 17 is equal to, this is 0.432 meter. This is second answer. हमें देखिए क्वेश्चन में गिवन था ये रॉड, and this is suspended with the help of two wires A and B. वायर ए के लिए लेंथ L1 is equal to L, एरिया क्रॉस सेक्शन एंड यंग्स मॉडुलस आर गिवन। सिमिलरली फॉर वायर बी के लिए अब क्वेश्चन में कहता है कि इस मास M को कहां पर सस्पेंड करें, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर सस्पेंड करें, जिससे कि दोनों, फर्स्ट पार्ट में कहता है कि दोनों वायर्स में इक्वल स्ट्रेस डेवलप हो। हमने सपोज किया कि x डिस्टेंस पर इसको हम सस्पेंड करें, तो दिस डिस्टेंस इज x, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 1.05 माइनस x. Now equal stress is given, therefore stress in A is equal to stress in B. Now you know stress is equal to force upon area, here also for second wire, and this can be written as F1 upon F2 is equal to A1 upon A2. Now area cross section is given 1 upon 2. This is suppose equation number 1. Now taking torque about point D, and you know that torque is equal to force into perpendicular distance. Similarly, this is force F2, this force here F2 into this perpendicular distance, right? Now this can be written as F1 upon F2 is equal to, this is 1.05 minus x upon x, and from equation number 1 and 2 दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, this 1 upon 2 is equal to 1.05 minus x upon x, this F1 upon F2, and this is also F1 upon F2, तो दोनों को हमने इक्वल किया, and from here this x is equal to, cross multiply this x into 1 is x is equal to this into this is 2.10 minus 2x. Then on solving, x is equal to 0.7 meter. First answer. Now in second part, given that दोनों वायर्स में हमें स्ट्रेन इक्वल प्रोड्यूस करना है, इक्वल स्ट्रेन होना चाहिए. Now we know that strain is equal to force upon Young's modulus, and this is stress upon Young's modulus, and this is F1 upon A1 into Y1 is equal to this for second wire F2 upon A2, or this Y2, and from here F1 upon F2 is equal to A1 Y1 upon A2 Y2, right? Now this F1 upon F2 is equal to this 1 upon 2, वैल्यू रखते हैं A1 और A2 की, and also this y1 is 2 into 10 to the power 11, y2 is equal to 7 into 10 to the power 10. Solve करने पर this is 10 by 7. This is like equation number 3. Now from equation 2 and equation 3, from equation 2 and 3
क्या करते हैं, दिस 1.05 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10/7, दिस F1 अपॉन F2 एंड दिस इज हियर आल्सो F1 अपॉन F2, दोनों को इक्वल किया हमने 10/7 दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 10x इज इक्वल टू दिस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 7.35 माइनस 7x को इधर तो दिस इज 17x इज इक्वल टू 7.35 एंड दिस x इज इक्वल टू 7.35 अपॉन 17 एंड दिस इज आंसर इज 0.432 मीटर. Now please subscribe the channel and press the bell icon. आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है. थैंक यू.